Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Gurbani Vichar session. We named our Vichar sessions Unveiling the Essence of Gurbani, and this is more information about it. We are going to have 6 weeks, 6 हफ्ते का session है. इतने dates भी लिखियां हुई हैं. जिहड़ा बार पोस्टर लगे और इस पुरानियां dates लिखियां, but mainly Sunday ਨੂੰ for 6 weeks ਅਸੀਂ cover करना चाहते हैं कि सारी रहरास चिट्ठी बानी. Some other topics which are listed here. What is Naam, what is Hukam, what is Homay, what is Sahaj. Sangat ਨਾਲ ਅਸੀਂ discuss कर सकिए. We want to keep it so that it is more interactive also. आज थोड़ी technical issue करके थोड़ा late start हुए हैं, but we still want to cover today's topic. वाहिगुरु जी अगे अरदास करते हैं अपने मानिश to give us the best of this session, and with that I'll just start with a sloka and then I'll continue. Dindot Bandan Anik Par Sarab Kala Samrat Dolan Te Rakho Prabhu Nanak Dekar Hath. So let's first go over why we are calling it Essence, Unveiling the Essence of Gurbani. These sessions we want to do a little different. We want everyone to be able to understand and internalize. ਅਸੀਂ ज़्यादा रहरा साहब जी ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ज़्यादा ਸਾਖੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ we have internalized, we have understood it. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਮੈਂਟ, that's all very welcome in this session. So today's topic which we covered is Mool Mantar, which we plan to cover. Mool Mantar, Naam and Rahras Sahib Ji Bani. So we'll get started. Mool Mantar, इधर ਅਸੀਂ सारे ने बहुत बारी विचार सुनिया हुआ है, पढ़िया भी हुआ है. गुरु नानक देव जी जिन्हें सानू दिता है. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सब तो पहलियां ओपनिंग वर्स, ओपनिंग तुका है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपन गुर प्रसाद. The most important fact of this is that this is an opening lines from Shri Guru Granth Sahib Ji. That's where there is a Gurbani Sahib, Satguru Sanu Bakshi hai Guru Granth Sahib Ji Sahib. This is the opening lines for that. And it's also Mool Mantar kehte hain, and there is some other vichar ki nahi Mool Mantar extends beyond that. But that's a secondary fact. But what is Mool Mantar? Mool Mantar itself is a very important thing. Mool is the root, jada the origin. Mool Mantar, jada mantra, jada main mantra kira hai, jada sanu it's not written as Mool Mantar in Guru Granth Sahib Ji, it's written as the opening tukka, but that's what we are told. We are told about it. This is a Mool, it's a main basic as Sikhi is a mantra hai. क्यों क्या है? Just that word जरा जो है एक ओंकार, किन्ने यदि इसकी यदि व्याख्या सुनी हुई है, एक जरा सर्वव्यापक जरा है, एक रस व्यापक है, एक ओंकार, ओम, ओम. तीन वक्री सेंस करके व्याख्या कर दी है, but mainly Satguru Ji is trying to keep our attention to that one and only divine God, Akal Purakh Vaheguru, जो भी किसी ने कह रहा है. In that one word he is describing, in एक ओंकार, he is telling us mind, he is directing our mind towards that one divine. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ओंकार यूज़ करता है. एक ओम ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ जिन्हें भी डिफरेंट ट्रांसलेशंस लगी हैं, फ्री कोड की स्टीक, प्रोफेसर साहिब जी की स्टीक होर किन्नियां स्टीक आई हैं, बड़ी डिफरेंट तरीके नाल डिस्क्राइब किया है. ब्रह्मांड वो ओम की धुनी जी सारे ब्रह्मांड विच हैगी है, जी एक रस व्यापक हैगी है. The moon is that om, which is that vibration. This is how it's also described as in this universe, that whole vibration of om, that's one omkar which is forever there. That's the omkar. And for us that's all.
what we need to. It should direct us mind. It should let our mind towards that God, that only one God. उसके बाद it starts to elaborate. सत नाम ब्रह्मांड तो आके एक ओंकार that only तूने जो ब्रह्मांडी जे. Now it's coming more closer to our existence. ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਸਤ ਨਾਮ, it has a true name. ਸਤ ਨਾਮ, his name is true. Karta Purakh, and then it describes more qualities about that one divine God. ਜਿਹੜਾ describe ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ that's formless, right? You cannot fathomless, you cannot understand. So it's Karta Purakh, he is Karta Purakh, he is the creator. वो है जो कर रहा है. Then more qualities, adding more worldly qualities so that we grasp it. At the end of the Mool Mantra, we are transcending our mind to a different realm already. Once we have known this world, ਅਸੀਂ already ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Mool Mantra ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ. Because Guru Nanak Dev Ji has given us this, our mind grasps this. To some extent it grasps this जितने तक कर सकता है. सत नाम कर्ता पुरख निर्भाव. We all know it is without fear. निर्वैर, that Vaheguru has no hatred. अकाल मूरत. कितना मुश्किल चीज़ दस दी. अकाल मूरत. It's a timeless form. अकाल काल तो परे होती मूरत है ये. At least ਅਸੀਂ सुन सोचता सकते हैं ना. Without these two words, how would even comprehend that there can be something which is a timeless form? So that's that timeless form, Akal Murat. Ajuni Saipang, उनको किसी की लोड़ नहीं है कि light, it's self-illuminated. उनको सूरज के प्रकाश की लोड़ नहीं है. किसी, it's the qualities of that one divine God. So we know we can transcend to it. Our mind knows what we are talking about. Gur Prasad, उठी जाती है. Gur Prasad पे जाके मूल मंत्र में कहते हैं. What does it? That's a very important message. All that which we are trying to grasp, that one Vaheguru, that one Akal Purakh. How do you realize it? Gur Prasad. Without the grace, Guru Prasad, Guru di Kripa de bina, वो नहीं कर सकता. You obtain it, you attain it, you merge with it by Gur Prasad. So that's kind of an essence of that Mool Mantra, which we call Mool Mantra, which are the opening verses of Shri Guru Granth Sahib Ji. It comes before Japji Sahib Bani starts. It's also Mool Mantra also comes before every rag in Shri Guru Granth Sahib Ji. We all know Shri Guru Granth Sahib Ji. It has 31 rags, indexed by 31 rags. Before every one of those, सबसे पहले Mool Mantra आता है. So it has that much importance, that much significance for our existence, for our spiritual progress. Sani Sadguru ne sanu har thaan te sanu dasya hai. And then starts Japji Sahib. Japji Sahib, next 8 ang Shri Guru Granth Sahib Ji. That's what is Japji Sahib. 38 pauriyan hai, 38 stanzas, and there is also a concluding slok with it. So what is Japji Sahib? So Mool Mantra, Ekokar starts with that whole universe, Brahman existence. It tells us the qualities of that Vaheguru, and then throughout the whole Japji Sahib, it describes the nature of that ultimate reality for us to be able to comprehend it. So what we decided is, and then in this session we will cover Rasa, because Rasa to Divani. बिल काट मिली है विचार करने में उसी जब जैसा जीवानी का विचार कर लिया मोड़ पानी का विचार कर लिया. So from Mool Mantra it becomes very important that it ends with Gur Prasad. We attain that Vaheguru with the grace of God. सवाल आता है, how do we attain? And throughout Shri Guru Granth Sahib Ji, our Sadguru tells us Naam. Through Naam we attain. Right? So that's the next thing before we start getting into our nickname Banis. I wanted to cover Naam. Naam the concept clear हो जाए. If you have heard so much about it, कि ये word है क्या, कि ये शब्द है कि नाम, थोड़ा अंदर जितनी कोशिश हो सके मन को पता लगे कि
की गल हो रही है, वाहिगुरु जी सानू सतगुरु जी की दसते हैं नाम बारे। एक गल तो बहुत क्लियर है, by all are knowing, it is very important based on all the Bani which is telling us, you know, everywhere the naam is so important. It says भई प्रापत मानव दे हरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। रोज रहरासा विच पढ़ते हैं कितना इंपॉर्टेंट नाम सानू दस्सिया सतगुरु जी ने। ये जिहड़ी भई प्रापत जिहड़ी मानव देह जिहड़ी सानू मिली है, ये साडा एक मौका है, दिस इज अ चांस मिलन गोबिंद नू मिलन दी। अवर काज तेरे किते ना काम, nothing else, everything else you do is not that important for the main purpose of your life. The main purpose of your life to connect with that Vaheguru. How do you do that? Mil saat sangat baj keval naam. Recite the naam in the company of saat sangat. But then ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ that progress becomes much better. समझ के so we know it's important. भई प्राप्त मानव के लिए गोविंद मिलन की करिया, अवर काश तेरे ना काम साथ संगत बच केवल नाम। Then there is so many places in थोड़ियां जिहां तुक्कां हैगे। This is from Guru Nanak Dev Ji 941। नाम रखते पावे मोख द्वार, की मिलता है, की हो जाता है जे तुहानू नाम, जे तुसी नाम विच रख जाओ, समझ जाओ, की हो जाता है। नाम रखते पावे मोख द्वार, if you attune with it, rang jao naam vich, if you are attuned to the naam, then you can find that door of liberation. Mokh dwar, mukti ka dwar, we can have a whole discussion on it, but we know what is this being talking about. Mukti from where we can comprehend, we can go to that another dimension, we जीवन मुक्ति we can be in, ਅਸੀਂ समझ जाइए, ਅਸੀਂ उस द्वार पे पहुंच जाइए। by नाम, नाम रतन त्रिभुवन सोची होए। Attuned to the नाम, we understand the power of the three worlds. Three worlds कितनी बारी आते हैं त्रिभुवन, गुरबानी विच आते हैं, four religions hinduism विच आते हैं, four religions विच आते हैं, आकाश पताल, जिहड़ा दर साडा है कि धरत आकाश पताल, त्रिभुवन सोची होए। सब तो पूरी दो लोग तो असं बड़े अच्छे समझ लेंगे हैं, ज़्यादा समझ नहीं आते पताल की गल हुई है, किन्नी ट्रांसलेशन मिलती हैं, डिफरेंट मिलती है, किसी रिलीजन कोई मिलती है, साढ़े ज़्यादा होती, बट त्रिभुवन सोची हुए कहते बाय नोइंग दैट, बाय अट्यूनिंग टू दैट नाम यू कैन डू दैट, वो सोची आ जाती है। नानक नाम रते सदा सुख होए, ये नानक जी नाम नाल, इफ यू आर अट्यून टू द नाम, जे रब का नाम मिल गया, if you are connected to that naam, then you get that eternal bliss. So it's very important to know naam is not just in Sikhi, ऐसी Sikhi which नहीं है, बहुत research I just this next 5 slides I have from the Mystery of Naam by Dr. Gurdeep Singh ji, उन्होंने एक बारी present किया सीगा। How old is the concept or tradition of Naam Simran? So many scholars have done a lot of research on it. Do other religions also practice Naam Simran? Question. So there are other related words to it. Gurbani ਵਿੱਚ ਹੀ नाम सिमरन जप, नाम सिमरन करना, जप करना, जाप करना, आराधना करनी, बंदगी, त्यावन, भजन, कीर्तन, भक्ति, अरदास, बेनती, these are all related. बिनो बेनती, जांचना, पाठ, पूजा, ताप, तप, तपस्या, meditation. This is all a way to connect. In a way, that basic understanding of Naam comes when you try to relate it to all of these words. What is that Naam? What is the ultimate goal of doing that Naam? In all religions, the ultimate goal of Naam Simran is to be one with that one divine, that Vaheguru. And what is Naam? Naam is that source, that medium through which you become one with that Vaheguru. This is a fact. It's a hard jagah Gurbani Vishnu. It's a state that is a unique. Gurmukh naam japiye tit tariye, gat nanak virli jati jiyo. This is
ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਦਿਸ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ So now Naam and one God and God being eternal, there's few examples I have here. I will cover from few researchers have been doing this. According to Judaism, there is one and only one God, which is omnipresent, omnipotent, omniscient, eternal, and gracious. He has created man in His own image. Right? The universe was created out of nothing but by that eternal God, by uttering the word. That is how Judaism is in by uttering the word. But then, what else they say? Whoever goes beyond, says the name of the God is holy, so pure, and it must not be uttered. Why? When it becomes, there's a profanation of that. That is in Judaism. But it still agrees that name of the God is so holy. In Sufism, the God, the absolute being, is the only reality. All beings emanate from Him. He is the real author of good and evil. By His grace one attains spiritual unity with Him, with the God. The soul bird is confined within the body cage and it is purified by following the path with the help of Murshid. Murshid is again their religious teacher. How? By remembering the name of God. Rabda naam yaad karke. And their practices, Sufi practices, dhikr is a remembrance of God in a rhythmic repetition of that name. Then there is in Wikipedia the practice of Muraqaba, Sufi word of meditation, and dhikr have very close resemblance with the practice of Jewish mystics. Right? So Qawwali, Sama. So this is just an examples of there's a reality to it. Right? The names are disappearing in this there. We need to understand that. We need to know the essence of that. So few main points to remember as we covered that is, first of all, our Sadgurus have told us many times through ever again and again in Shri Guru Granth Sahib Ji, Naam is important. And in our context of this discussion, of spiritual discussion, Naam is Bandita Naam is in this discussion, it literally means name of God, divine, Kal Purakh, Vaheguru, whatever you call it, right? And there's more to it. And our Sadgurus have guided us throughout Shri Guru Granth Sahib Bani about the importance of Naam and staying connected with Naam. Because simmer karo, bol ke karo, kha ke karo, but ki karo, bani da karo, shabad da karo, so that underneath you are connected. That Naam is connected. Right? Naam is the source, the medium, that unique existence of the vibrations under the word that you recite that can bring you the realization of that one reality and oneness. True Naam, Sat Naam, Sacha Naam, true name is also very important. You want to be connected to that true, that one, there are Satnam, Ikonkar Satnam hai na. Oda Naam, that's why other religions is only mane kita hai na Judaism which it pollute hi kar do isse naam loge. It's another way of saying ki Satnam hi lena hai. Sache naam wale isi kal kare. True name is very important, which means from the original source that is already part of divine or divine itself. Turki Bani, Satguruan di Bani, Satguruan da Ditta Naam. That's the true Naam. So these are the few things about Naam to internalize. And then from Naam comes, and then as that process, already understanding Sanuditya Satgurani, from that comes in a routine Sanuditya, to stay connected to that Naam, knowing that day after day, as we exist as a human form in this world, it's important to reconnect day after day, every day. Nit name, rozda nit name banana. Right? Nit name diya baaniyan dittiyan sanu. And ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, but nit name diya ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, and it just varies, but mostly in the smallest form which is there, which everybody finds convenient. And more you do it is your choice, but
this is as prescribed. Japji Sahib, there is the first 8 pages of Shri Guru Granth Sahib Ji by Guru Nanak Dev Ji. It has 38 stanzas and 2 slokas. It had 30 paudiyaan in here. Between 10 to 20 minutes. You know, it doesn't take more time. Jaap Sahib Ji by Guru Gobind Singh Ji, 199 stanzas in here. Shabad. And it is rich from the words from Sanskrit, Bihari, Arabic. Again, that Jaap Sahib Ji, between 10 to 20 minutes. जी बहुत ही प्यार ਨਾਲ पढ़ी है आप जी की इच्छा पर this nickname overall for every day, and there's a Swair Di Wani Swaye, again that's by Guru Gobind Singh Ji, 2 to 3 minutes, has 10 shabads. उस तो बाद शाम की बानी आ जाती है रास्ता छोटी बनाई है मैं कितने पढ़िया अपना नहीं मेरा लिखा पढ़िया बड़े बड़े विद्वानों का कि उन्होंने छोटी बनाई है ताकि असं अपने काम पिछों ना टाइम कट के कर लिए रास्ता की बानी. It has hints from different gurus and other banis, Anand Sahib, Chaupai, Guru Gobind Singh Ji. And then for Jiri Rati Son to Pehla Kirtan Sunna. It's a mixed bani, it's not by single. वो भी छोटी 2-4-5 minutes you can cover that. Those are the prescribed nickname banis to us for as 6 prior Satgurus, that Turki bani which is no existed. You know, कोई उधर parallel existence है ही नहीं है, आज exist नहीं कर रहा. कितने watch पे हैं, so many layers have collected in everywhere else where this concept was there, but we are the fortunate ones, we have that. So we wanted to focus on Rehras Bani. It's one of the prescribed techniques. Sham sanu dasya hai. So few things about nickname. It purifies mind. There is lot more which happens without maybe in unawareness, but it purifies our mind. Right? That's easy to comprehend. Makes one as instrument of one divine, even if one is not aware. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤਾਂ why do you do what you do? And have faith. Once you start doing by Satguru's Bani, you are becoming ਉਹਦਾ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. Even if you are not aware, if you are aware, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ. It uplifts you towards that prime, supreme, omnipresent creator, provider. ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ words ਲਾ ਕੇ describe ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ, you get uplifted. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Then that emancipation and liberation by living, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ. जीवन मुक्ति देखिए समझ आने लग जाती है. वाणी पढ़ते हो, वाणी ਨਾਲ कनेक्ट होते हो, समझते हो like that just that मूल मंत्र itself. Compare yourself with, if you have to describe what is God, तो कितना आसान लग गया तो माइंड में थोड़ा शायद तुझे बोल के बात डिस्क्राइब ना करो पर तुम्हें पता लग गया किस चीज़ की गाल हो रही है. ठीक है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने पता भी नहीं है, वो कभी किसी ना रिजेंबल करेंगे, किसी ना रिजेंबल करेंगे. So that's, and if you do the whole bani, if you are connected through nickname to the Bach, then you can get to the state which Vaheguruji again and again wants us to, Satguruji wants us to achieve, the Jivan Mukti. So we move on to the Rehras Bani. Before we move on, Sangat vichon kisi ne kuch add karna hoye, kuch share karna hoye, please kar sakte ho. Any of your comments? I think this is a interactive session. कोई question हुए तो भी पूछ सकते हो, and then I can start. One question, please. हाँ जी. Last night you mentioned that when you do nickname, you become divine, even if you are not aware. This is not aware. If you are not aware, then it's more like a ritual. Let's say you have no understanding. That's a very good point. Let me talk about what I meant. When you are doing a nickname, and if you say you do nickname and you are not aware, then you are just doing it as a ritual, which is very right. But what I meant to say was
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ? you are aware that you are doing nickname, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but there is something inside you which is getting connected. You might feel it, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। That's what I want. But yes, never do it as a ritual. This is the whole, you understand why you are doing it and then do it. Any understanding ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ मीना जी, thank you for sharing the but थोड़ा जिहा होर जो ते लाइट सेट कर दो, क्योंकि जिस बाबी कहते रब का नाम है पर नहीं भी है, क्योंकि नाम बड़ा औखा है, किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस तरह आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो शायद असी नाम लेने हैं पर कहते असली नाम पानी के सालों जो पले बंदे बाबा जी दस रहे कि वो है जब मालिक आप अंदर आ जाता है, राइट? सो दैट इज द अल्टीमेट नाम टू माई अंडरस्टैंडिंग, टू हेल्प एक्सप्लेन थोड़ा जिहा कि असी कभी गलत फहमी ना होइए कि बाबा जी नाम जो है बाबा जी वाहिगुरू का सारे नाम जो सारे रब के नाम ही है, और फिर जो बाणी भी कहती है कि असली नाम जो है वो रब आप अंदर आके आ जाता है, असली नाम उत्थे चालू हो जाएगा। सो मैं माफ़ी करता मेरी गलती होनी है, प्लीज़ हेल्प अस सर्विस असी किते women are here. Thank you. If anybody else also wants to comment about it, please do that. But Paulji was asking. So, you know, अखर औखा साचा नाम ये भी क्या है ना, but ये भी क्या है कि दोनों पासों you know you have to keep trying. ये नहीं हैगा कि तुसी करना नहीं है कि तो उन्हें करना है तो उन्हें पा देना नहीं होता है। Effort has to come from you have to do it, then only you can realize it. Throughout the Bani, in your naam japo, so you realize it. Then you become aware of what you are. So it's both ways. It's not only one way कि कुछ ना करो तो वो आ जाएगा. But there's an acknowledgement कि आखन औखा साचा नाम, सच्चा नाम आखना आसान नहीं है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਫੀਲ that ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ that we are doing it, because throughout Bani it's always said ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर दैट। doing that। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? So we move on to the Rare Ras Bani. Rare Ras Bani, so Rare Ras का मतलब पहले सोच, and yeah, there's different meanings. मान कोशिश ये भी है Rare Ras, राह दी रास, जिंदगी दे सफर वास्ते खर्ची, सफर दा रास, सफर वास्ते बनिया नाल बन के जा रहे हो, सफर जिंदगी दे सफर वास्ते भी बनिया। There's other ones, रहुली मर्यादा, it's also come for बेनती करनी या मत्था नमस्कार to pay obeisance to somebody, and it's a way of life or it's paying obeisance to somebody. So those are the different meanings of the Reras. So Reras Bani, which comes in Shri Guru Granth Sahib Ji, it starts from the Sodar Bani, but whenever we read different Tirupati Sahib ne different उन्होंने पहले श्लोक होने हैं, but this श्लोक is always there, so I wanted to bring it। Rare Bani पढ़ करते होता श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग प्यार जासुक तामना हुई, तू करता करना भी नाही जाऊँ करी ना हुई, बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाए लिखिया, जात में जोर झूठ में जाता कल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिख सवालियो जिनकी सो पाठ पिया, कहो नानक करते क्या बातें जो कुछ करना सो कर रहा। सुखी कहते पे हैं श्लोक विच ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ
कि दुख रारू सुख रोक पिया बहुत सुनिया सी ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ दारू ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ and it is trying to relate it to for in the spiritual progress of yours and as you awaken you feel this is the dukh but then you awaken to the highest reality right that's that dukh ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ is the next उसको भी ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ that is translated very differently in different sticks frequent stick different लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा है many different ones some of them has translated tham as desire jas tham na bhi so कहते कि नहीं because the suffering is the medicine pleasure is a disease because when there is a pleasure then there is no desire for God right वो tham na bhi but mostly most places it is tham is as tham right jas tham no is related as ਜਦੋਂ ਪਰ ਦੁੱਖ दारू ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that's been translated in many more places than the desire one here mostly English translation desire वाली लिखी हुई है but of course Sikha जिसकी प्राणी that's where it's translated as ਦੁੱਖ दारू ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ तू करता करना में नाही जाहू करी ना he says you are the one who is doing everything you are the creator God ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ then it goes to the next level ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ इसमें ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ you are everywhere अपनी कुदरत बना के उस ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ हैं तेरा अंत ना जाए लख्या who can know तेरा अंत की कौन समझ सकता है इतनी लख्या का मतलब है समझना लख तो किसी कोई नहीं समझो लिमिट्स cannot be known that's the how बलिहारी कुदरत वसे तेरा अंत ना जाए लख्या जात में जोत में जाता अकल कला पे पूर रहा तो सच्चा साहिब सिर्फ सवालों जिंदगी पापिया जात में जोत कहते जिन्नी जी जाता जिन्नी डिफरेंट सृष्टि वैरायटी ऑफ द सृष्टि विश्व सिंह वो तेरी ही जोत है वो सब तेरी ही जोत विच रह रहे हैं जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा यू हैव दैट ऑलमाइटी पावर भरपूर रहा विद दैट पावर यू आर प्रोवाइडिंग एवरीवेयर हर चीज हर जगह पे तू समाया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवालो जिन कीती सो पार गया तू सच्चा साहिब यू आर द ट्रू वन द ट्रू मास्टर सिर्फ सवाल तेरी सोनी सिर्फ बड़ी सोनी है तेरी जिन कीती सो पार गया जिन्हें कर ली वो पार हो गया पार उतर गया मोस्टली दैट वी आर सपोज टू बी इन दिस सागर भव सागर विच है जितों असीं पार जाना से जिन्हें तेरी सिर्फ सलाह कर ली वो पार गया कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर गया नानक सानू करते दियां बातां दसदा He's telling the stories of the